देखिए, वुमेन रिजर्वेशन बिल पे कल एक दिन पूरा हम अनशन पे बैठ रहे हैं। इट्स अ हंगर स्ट्राइक, सिट डाउन पीसफुल हंगर स्ट्राइक फ्रॉम मॉर्निंग 10 to 4। अप्रॉक्सीमेटली 18 पार्टी ने वो आने का उन्होंने कंफर्म किया है। तो हम बिलीव कर रहे हैं कि सभी लोग जितने भी पार्टी आएंगे वो अपने अपने राय सामने रखेंगे और एक तरीके से प्रेशर बिल्डअप कर सकेंगे गवर्नमेंट को। तो इस सत्र में जो है वो महिला आरक्षण बिल को लेके आ सकते हैं, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट और हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी है ये बीजेपी के गवर्नमेंट के लिए। अगर ये बिल इंट्रोड्यूस अभी कर देंगे तो इतना मेजॉरिटी, इतना बहुमत इनके पास है कि बिल इमीडिएटली पास हो सकता है। तो हम मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस से भी कोई ना कोई आएगा। हमने उनको इन्वाइट किया है, तो ज़रूर आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन क्या आपको कांग्रेस से कुछ एश्योरेंस मिला है? बाकी पार्टीज कौन कौन सी है, इतना कुछ लिस्ट आपके पास? हाँ, बिल्कुल पूरा लिस्ट है 18 पार्टीज़ का। आई कैन शेयर इट, याद नहीं है। हमने किसी सभी से, लेकिन येचुरी जी स्टार्ट करेंगे फास्ट को। येचुरी जी के साथ प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना से जुड़ेंगे और बाकी अपने अपने हिसाब से सुबह से लेकर शाम तक आएंगे। क्लोजिंग में टीएमसी से सुष्मिता देव से हमने बात किया है। वैसे 3-4 और पार्लियामेंट मेंबर्स से भी हमने बात किया है। तो बहुत लोग अपने अपने इनको भेज रहे हैं, दे सेंडिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। सो दैट विल बी देयर एंड ऑफ कोर्स देयर आर मेनी वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने काम किया है इस बिल पे, तो वो सारे लोग भी जुड़ेंगे। लेकिन बहुत सारी डिमांड होती है कि रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन की डिमांड है। कांग्रेस की तरफ से एश्योरेंस नहीं मिला। कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि आप लोग बीजेपी की बी टीम है। इस तरह के भी एलिगेशंस हैं, क्या कहना है इसमें? देखिए, कांग्रेस और भाजपा का ये हमेशा से एक रवैया है कि कोई भी नया प्लेयर आता है, कोई भी नई पार्टी पूरे नेशनल लेवल पे काम करना चाहते हैं तो इमीडिएटली वो बोल देते हैं कि बीजेपी बोलेगी कि कांग्रेस के बी टीम हो, कांग्रेस बोलेगी कि अब बीजेपी की बी टीम हो। लेकिन हम किसी के भी टीम में नहीं है, हम लोगों की टीम में है, हम जनता के साथ है और जनता के मुद्दा उठाएंगे। इसीलिए 50% जो पॉपुलेशन है इस हिंदुस्तान के, महिलाओं का मुद्दा मैंने उठाया है। तो मुद्दे के ऊपर कांग्रेस क्या बोलती है, टीएमसी क्या बोलती है, वो इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि लार्जर पॉलिटिकल इंटरेस्ट क्या है। बट महिला आरक्षण के बिल के ऊपर सभी लोगों का सपोर्ट है एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग तो ये भी कहते हैं कि विदाउट कांग्रेस अपोजिशन का जो ये किस तरह की मुहिम चलती है उसका कोई मीनिंग नहीं है। नहीं, वो उनको लगता होगा, लेकिन आजकल परिस्थितियां बदल गई है। कांग्रेस पार्टी एक तरीके से सीमित हो चुकी है। काफ़ी राज्यों में तो आपको देखने को भी नहीं मिलेगा, काफ़ी प्रदेशों में, लाइक बंगाल में एक ही सीट मिला है अभी उनको। तो रिलेवेंस कांग्रेस पार्टी का जितना हमें लगता है या जितना उन्हें लगता है वो नहीं रहा है अभी। तो मेरा कांग्रेस पार्टी से भी विनती यही है, महिला आरक्षण बिल एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस वाला बिल है। मैडम सोनिया गांधी ने खुद 2010 में बहुत मुश्किल के साथ राज्यसभा में पास किया है, लेकिन वो लोकसभा में पारित नहीं कर पाई है। तो ऐसी पार्टी जिसने महिला आरक्षण बिल को आगे लेके आया उनको सपोर्ट करना चाहिए। दैट इज़ माय रिक्वेस्ट टू देम। मैम, आपका दिल्ली आने का दूसरा पर्पस भी है कि ईडी ने आपको समन किया हुआ है, क्वेश्चनिंग है, तो उसके बारे में क्या स्टैंड है? क्योंकि ईडी का कहना है कि जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी वाला जो मामला है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग में आपसे पूछताछ करनी है, कई सारी चीज़ों में। क्या कहना है उसमें? देखिए, जो भी पूछताछ जिस भी एजेंसी को करना है, हम सभी एजेंसीज को कोऑपरेट करेंगे, ईडी से भी कोऑपरेट करेंगे। लेकिन जनता से मैं इतना रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो लेजिटिमेसी इन एजेंसीज का है, कि जो पारदर्शिता बोलते हैं ना, ट्रांसपेरेंसी, वो अभी नहीं रहा है। सीबीआई हो, ईडी हो या आईटी हो, पहले जैसे इंडिपेंडेंट एजेंसीज नहीं रहे। पहले भी कभी लगता था आरोप इन पे कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, कांग्रेस ऐसा करती है वैसा करती है, लेकिन पिछले 10 सालों में जिस तरीके का अटैक होता है ऑपोजिशन पे, तो एक तरफा है पूरे एजेंसीज। फिर भी हम कोशिश करेंगे उनको पूरा कोऑपरेट करेंगे। अगर वो हद से ज़्यादा कुछ करते हैं तो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे और हम लोगों के अदालत पे सबसे ज़्यादा भरोसा रखते हैं। तो लोगों से भी लगातार रिक्वेस्ट करेंगे, उनको समझाते रहेंगे कि किस तरीके से अपोजिशन पार्टी के साथ ये बर्ताव हो रहा है। इस मामले में जो डेवलपमेंट है कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने पहले अरेस्ट किया, ईडी ने भी उनको अरेस्ट कर लिया है, ये डेवलपमेंट है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि जो पूरा मनीष सिसोदिया जी के ऊपर आरोप लग रहे हैं, जो पूरा ये एक्साइज पॉलिसी के बारे में जिस तरीके से ईडी, सीबीआई, आईटी का जो बर्ताव है वो पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल रहा है और काफ़ी लोगों के साथ बहुत मैन हैंडलिंग का भी इश्यूज़ है। और जो अरेस्ट है इनको हम कंडेम करेंगे हमारे पार्टी की तरफ से। हमारे पार्टी के नेता सभी भी कंडेम कर चुके हैं। तो आगे चल के भी लोगों को एक भरोसा होना चाहिए कि कुछ वाइट कॉलर क्राइम होती है तो ईडी पे भरोसा कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके का ईडी का रवैया है ये भरोसा तो उड़ गया लोगों का। तो आई विल जस्ट हैव टू से दैट इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट मिस्टर सिसोदिया इज अरेस्टेड एंड वी विल कंडेम द अरेस्ट। एक मैम और इसमें नाम है अरुण रामचंद्रन पिल्लई का, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है उनके बारे में कि ईडी ने अपने पेपर में लिखा है कि उन्होंने बेनामी इन्वेस्टमेंट किया
इसके बारे में हो सकता है कि इस बारे में भी आपसे सवाल जवाब किया जाए, उनको भी बिठाया नहीं, जाए? बिल्कुल हर तरीके के सवाल का हम जवाब दे देंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है। किसी के सामने भी बिठा देंगे तो सच तो हमेशा फिर भी सच ही रहेगा ना। तो मेरा सिंपल सी वन लाइन आंसर और यूनिवर्सल ये इशू ये है कि मुझे पूरे इस लिकर पॉलिसी से कुछ लेना देना नहीं है। बहुत से हैदराबाद के बिजनेसमैन यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं, तो उसी के वजह से ये लोग चाहते हैं कि मेरा नाम कहीं ना कहीं लेके आए। लेकिन जिस तरीके से इनका बर्ताव है काफ़ी लोगों से, जिस तरीके से उनके साथ एक ऑपरेशन हुआ है, मिसट्रीटमेंट हुआ है, अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट्स एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश किया है, तो दैट आई विल डेफिनेटली कंडेम, बट आई विल आंसर टू द ईडी फॉर एवरीथिंग दैट दे हैव टू आस्क, आई विल टेल। Ma'am, tomorrow you are going to sit on hunger strike to demand the women's reservation bill. India as a nation has about 49% of women population, and I very strongly believe that women should be given their due share in the political participation area, and that we are lacking today. At the local area, around 21 states of this nation are giving 50% reservation, except few states like Uttar Pradesh and few other northeastern states where they are only giving 33%. And wherever and whenever women got the opportunity, we proved ourselves to be wonderful administrators. So I believe it is time that the women make their space in both parliament and assembly. And given to the diverse and patriarchal nature of our country, I strongly believe until and unless you have a bill and you have a compulsion, parties will not on their own give space to women. So it is very important, and the historic opportunity that the Bharatiya Janata Party today has at the center is that they have full mandate. When you have full mandate, you can easily push bills like women's bill, because they have done that earlier in Aadhaar case, in triple talaq, in 370, in various cases. They managed to push the bill. So there are only 2 more sessions left. I really request Honorable Prime Minister and Honorable President of India to please help the women's bill to be tabled in this session or the next session and get it passed, because they have huge majority. Is it an opportunity for opposition unity? Absolutely. It is definitely an opportunity, and we have reached out to all the opposition parties to support us in the bill. More than 18 parties have, conveyed to us that they will attend and support this entire dharna and the sit-down fast that we are doing. Definitely, on issues of common interest, every opposition party should come together, every opportunity should be explored, and more than anything, the unity of opposition should be demonstrated. That is what I believe, and if tomorrow's dharna is becoming a stage for that, I am very happy, because people of this nation should know that the opposition is with them, and opposition is with the women of this nation. Did you get any assurance from Congress party? Because Congress leaders are still saying that there is no meaning of opposition unity without Congress. No, on this particular issue, I think the credit should go to Madam Sonia Gandhi, who tried and pushed the bill in Rajya Sabha when she could, but in Lok Sabha it could not happen, unfortunately. But then Congress party till now has not confirmed any participation. So kal ke bill mein I'm sure they will support, kal ke issue mein. But in the larger political interest, I believe Congress should really think like a team player, not like a leader, because given to their current situation and position in the nation, they should really reach out to every party, try and devise a strategy with which we can dislodge the BJP in 2024. And ma'am, what's your comment on ED summon? There is no comment. They have summoned me. They have asked me to come here on 9th. I said I can only attend later after the dharna. So they have asked me to come on the 11th, which I will be attending. After CBI, ED also arrested Manish Sisodia coming back. It's unfortunate that Mr. Sisodia was arrested, and there is this draconian section in ED and PMLA Act, Section 50, which unfortunately puts the burden of proof on the victim itself. So if somebody is alleging me of a scam or something, then it is for up to me to prove that I have not done it. And against a system, it is very difficult to do that. So my prayer with the Honorable Supreme Court is they should hear this Section 50 as soon as possible and save the opposition, because ED and the ruling Bharatiya Janata Party constantly is targeting the opposition just by using that draconian law of Section 50. And what about Arun Ramchandran? What about him? ED is saying that
Benami investment by. See, tomorrow I can say that I have given 1,000 crores to Mr. Modi. That does not mean anything. So it is, if I am saying that I will allege that I gave 1,000 crores to Mr. Modi and Mr. Modi has to prove that I have not given, that is not fair, right? So this is something like that. They can allege anything that they want, and they should find a way to actually make it legitimate and under the sections of law. If they can do it, I'll welcome it. If they can't, then हंगर स्ट्राइक पर बैठने जा रही हैं इतना स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का, बाकी किन किन पार्टियों से आपको इशू? రేపు మార్చి 10వ తారీఖు నాడు జంతర్ మంతర్ దగ్గర నిరాహార దీక్ష చేస్తూ ఉన్నాము. మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లును పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టాలని చెప్పేటటువంటి ఉద్దేశంతో భారతీయ జనతా పార్టీకి ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి మెజారిటీలో చాలా సులువుగా పాస్ అయ్యేటటువంటి బిల్లు మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు. ఈసారి ఒక సెషన్, ఇంకొక సెషన్, 2 సెషన్స్ మాత్రమే అవైలబుల్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ 2 పార్లమెంట్ సెషన్స్లో ఏదో ఒక సెషన్లో మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు పెట్టాలనే డిమాండ్తోని రేపు దీక్ష చేస్తూ ఉన్నాము. దాంట్లో దాదాపుగా 18 పొలిటికల్ పార్టీస్ కూడా పార్టిసిపేట్ అవుతూ ఉన్నాయి. అనేకమైనటువంటి మహిళా సంఘాలు, అన్ని రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి చాలా మంది సోషల్ యాక్టివిస్ట్ అంతా కూడా పాల్గొంటూ ఉన్నారు. సో దీనివల్ల ప్రభుత్వం మీద కొద్దిగా ఒత్తిడి పెరిగి బిల్లు పెడతారనేటటువంటి ఆకాంక్షను మేము వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నాము. ఇంత పెద్ద మెజారిటీ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వంలో ఈ బిల్లు తప్పకుండా పెట్టాల్సిందిగా కూడా గౌరవనీయులైన ప్రధానమంత్రి గారిని, మోదీ గారిని, అట్లానే రాష్ట్రపతి గారిని కూడా మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ రేపు వస్తుందా రాదా అనేటటువంటిది ప్రతినిధిని పంపించమని చెప్పి మేము రిక్వెస్ట్ చేసాం. మా తరఫున పంపించవచ్చు. అదర్వైజ్ ఆల్సో వాళ్ళు సోనియా గాంధీ గారి ఆధ్వర్యంలో ఇదివరకు చాలా మంచి ప్రయత్నం చేశారు మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లులో. 2010లో బిల్లు పాస్ అయిందంటే మేడం ఉండబట్టే పాస్ అయిందని చెప్పి నేను బలంగా నమ్ముతా ఉన్నాను. కానీ లోక్సభలో వారు పాస్ చేయలేకపోయారు. సో ముందు వేరే విషయాల మీద ఎట్లా ఉంటుందన్నది పక్కన పెడితే మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు మట్టుకు వాళ్ళు ఎవరన్నా వచ్చి సపోర్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది, వస్తారని నేను భావిస్తా ఉన్నాను. ईडी ने आपको समन किया है, इसमें मनीष सिसोदिया को भी ईडी ने अरेस्ट कर लिया है, अरुण रामचंद्रन पिल्लई का नाम है जिनके बारे में कहा गया कि बेनामी इन्वेस्टमेंट किया, तो ये सब तमाम चीज़ें हैं, आपको समन किया है, क्या इन सारी चीज़ों पे आपका स्टैंड है? ఇప్పుడు ఏదైతే కేసు ఢిల్లీ పాలసీ కేసు, లిక్కర్ పాలసీ కేసు అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారో దానికి నాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు. అనేక మంది అనేకమైన విషయాలు చెప్పారని చెప్పి ఈడీ కానీ సిబిఐ కానీ పదే చెప్తున్నది. కానీ నేను ఎటువంటి సంబంధం లేదు కాబట్టి వాళ్ళు రమ్మని సమన్ చేస్తే ఈరోజు రాలేకపోయినా ఎల్లుండి వస్తా అని చెప్పాను. తప్పకుండా వెళ్తాము. వెళ్ళి వారు అడిగిన ప్రశ్నలన్నిటికీ కూడా నాకు తెలిసినంత మటుకు తప్పకుండా సమాధానం చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇక ఆ పైన నేను